Good afternoon, everyone, and welcome back to third session of day 3 of the 1 week FDP on reskilling of faculty as per NEP 2020. We have participants joining from all corners of the country, and Dr. Surbi has joined us. Welcome, ma'am. We are waiting for respected Dean sir. Ma'am, Professor Seema Madam has also joined. She is going to be the resource person for this session. And we welcome you, ma'am. If am I audible to you? Hello, ma'am. Namaskar. Namaskar. Okay. Good afternoon, everyone. I, on behalf of School of Life Sciences and Technology and Department of Botany, welcome everyone to this session. We have a very prominent and very extremely talented and qualified resource person joining us in this session, Professor Seema Dhawan. Madam is working at IIMT Nandan Bahuguna University, the Central University in Srinagar, in Department of Education, Birla campus. Welcome, ma'am. Welcome to IIMT. I would also request Dean Sir, Dr. Navneet Sharma, to please welcome Madam. Thank you, Vatsala ma'am. We are really lucky that Professor Seema Dhawan ma'am is with us for this third session of third day of FDP. As I promised you people that in the beginning of FDP only, that we will try to get the best resource persons from all over the India to facilitate you, to encourage you. So in that chain, we invited Professor Dhawan ma'am, and I am thankful to her that she kindly agreed upon to give a lecture on the topic, and it is a very vibrant topic. So already it is 2:10, so I don't take much time, and I again thanks Professor Dhawan ma'am that she is here on this platform, and hand over the mic to Dr. Vatsala. Thank you, sir. Thank you so much. I would also like to introduce Head of the Department, Botany, Dr. Surbi Singhal, to our speaker for the today. Madam, please, if you could unmute yourself. At this platform, we welcome ma'am. And we are at the third day of our journey. This is our third session, post-lunch session. So we have heard a lot about you, ma'am, from Vatsala ma'am. So right now, without wasting our time, all the participants and myself also would like to hear you. Thank you so much, Dr. Surbi. So before I hand over the mic to the speaker for the session, I would very briefly try to capture her academic endeavors in as little time as possible, which has been given to me. So Professor Seema Dhawan has completed her MSc in zoology. And then PhD in forestry from Forest Research Institute, Dehradun. And she has obtained a second PhD in the field of education. So we can very well imagine the diverse experience that she possesses, and she's about to shower on all of us in this session today. She has a teaching learning experience of over 25 years now in the field of research and training experience at graduation, post-graduation levels. Madam is a member of State Resource Group, Uttarakhand. She's a member of Board of Studies and School Board of several universities, central as well as state. She's a member of NCTE OER Committee, member NCTE BEd Curriculum Development Committee, member State Focus Group for Assessment of NEP 2020. So the relevance of the speaker is established henceforth. She is also member State Focus Group for Vocational Education in NEP 2020.
She is co-coordinator of Dr. Ambedkar Center of Excellence, Hemwati Nandan Bahuguna, Garhwal University. She is coordinator and collaborator in Community Research Development Cell of Hemwati Nandan Bahuguna University. Madam has supervised 70 students for dissertations and PhD works in her long tenure. She has published several books, book chapters in different books, and she has a remarkable figure of 158 papers in national and international journals. She has developed 21 educational materials, including ARPIT courses and Swayam Prabha 32 channel. She has contributed her expertise in training modules for pupil teachers and teacher educators on environmental education developed by Center for Environment Education and NCTE. She has organized over 55 workshops, seminars, conferences, and delivered more than 200 lectures as resource persons, plenary speakers, and shared her views on various aspects at national and international forums. She has so far received 9 awards in educational field, namely Professor Satyapal Ruhela Best Educational Sociologist Award, Women Educationist Award, Gyan Jyoti Award, Teacher of the Year Award, Best Teacher Award, and so on and so forth. And this is just a little glimpse of the dynamic personality that she is. And without wasting any more time, Madam, I request you to kindly begin your session with us. Thank you, Dr. Vatsala, for such an elaborated introduction. I'm grateful to Dr. Navneet for giving me this opportunity to interact with you all. Thank you, sir. And I'm also thankful to Dr. Savita for inviting me, and so Dr. Surbi for welcoming me. First of all, I would like to congratulate the IIMT University for organizing this event, reskilling the faculty as per NEP 2020, which is the very relevant and most important part of. Thanks to you all. Namaskar to all the participants. I'm sharing my presentation. Please confirm me my voice is clear and my slide is visible. Yes, ma'am. It is complete. Okay, thank you. Today I'm not well, so there might be some in my voice. My slides are clear or not? Yes, ma'am. Okay. So I welcome you all in this post-lunch session, and of the 17 sustainable development goals. I support goal 4, that is related to quality education. Before presenting my slides, I would like to acknowledge all those experts whose help, whose experiences, whose notes or presentation or any kind of help has been taken in my presentation. So today we will discuss on the changing role of teachers, the learners, and the pedagogical approaches as per NEP 2020. So we will, this session we will discuss on the teaching skills which are required in the current scenario, and what are the characteristics of the learners for the 21st century. And then the dynamic learning environment. What is the dynamic learning environment? How we can change the learning environment? And then we will focus mainly on the 3 aspects of in related to pedagogy, that is the collaboration in learning, experiential learning, and open pedagogy. So coming to the first point, that is the teaching skills. So we all know that development of any nation depends mainly on the human resource, that is 65%, and teachers contribute to the development of human resource. So we must discuss what skills are required for the 21st century, and is research means good teaching? Not necessary. Then how to recognize a good teacher in the light of NEP 2020? So the first quality is the
spelled out. That means we are talking about the communication skill, how she or he communicates. So including the verbal and non-verbal clues, how one a teacher communicates with others, because this is the only profession whose result or whose success is determined on the basis of the transformation of knowledge, the content which he or she has transmitted to the others. The success of others or the students वो actually decide करता है कि what is the level of teacher or how the teacher is competent and how they can communicate. So this skill is very important, because the main focus of this noble profession is to transmit the knowledge जो हमारे पास है उसको दूसरों को हम कैसे transmit कर सकते हैं. That is the main important thing. The second one is the knowing the students. We generally see that bank में होता है KYC, know your customer. So here the customers are our students, the learners. So how well we know our students, their background, their learning style, home environment, how they behave, क्या उनका nature है, कि कहाँ उनको काउंसलिंग की जरूरत है, क्या उनकी डिफिकल्टी है. सो नोइंग द स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ अ टीचर. और आज की डेट में स्पेसिफिकली ये एम्फेसाइज किया जा रहा है कि आप अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके बैकग्राउंड को, उनके लर्निंग स्टाइल को आप अच्छी तरह से समझे. एंड व्हेन यू नो एवरीथिंग अबाउट योर चाइल्ड, देन यू विल परफॉर्म बेटर फॉर योर स्टूडेंट्स. And then as the teacher is the king of their classroom, so they must provide success to everyone. You can see here that every spike of this crown is different. It means there is diversity in the classroom. So हर classroom में diversity होती है. And providing success to all the students, जितने भी वहाँ पे available हैं, वो जो diversity है, जिस तरीके से वो है, उनको हर student को success provide करना is the responsibility of the class teacher or the teacher, because he or she is the hero of the classroom. So they have to provide opportunities in the classroom so that every student get success in the learning. And the next skill is the sharing. How effectively a teacher shares the knowledge, their experiences, the skills or the learning resources. So किस तरीके से वो share कर सकता है. और जितनी ज्यादा आज जो टेक्नोलॉजिकल जितनी एडवांसमेंट आई है, इनके साथ में वो शेयरिंग ऑप्शन है. बिकॉज अगर कोई भी टीचर कोई चीज हाइड करता है, इट मींस कि वो स्टूडेंट्स को ओपनली वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, या कोई भी स्किल है वो नहीं प्रोवाइड कर पाता. तो किस तरीके से वो शेयर करता है, और वो शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है एट द राइट टाइम पे. जितना कंटेंट या जिस तरीके की शेयरिंग चाहिए, नॉलेज की है, स्किल्स की है, एक्सपीरियंसेस है, जो भी शेयरिंग है, उसको वो कितना एफिशिएंटली कर सकता है. एंड ऑफ कोर्स keeping this teaching in a very simple manner. तो कितना सिंपल रहता है इन आवर टाइम. ये जो लाइफ साइकिल है हम देख रहे हैं, इतना सिंपल तरीके से हमारे सामने नहीं होती थी. हम लोगों के पास कंटेंट होता था, हम लोग उसको पढ़ते थे और सीखते थे. बट आज की डेट में जो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, वो बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से हम सिंपल वे में स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं, टीच कर सकते हैं, या अपने कंटेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं. And of course, the providing the opportunity to the students to think in their classroom is one of the important skill of the teacher. So as per the Socrates, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. So how a teacher provide the opportunity in the classroom to think the students? What to think is not necessary, but क्या वो उनको कैसे सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे सोचे, वहां तक लेकर जाना, वो जो अपॉर्चुनिटी क्लास में प्रोवाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आज की डेट में. एंड सो टीचर को इस तरीके की डिफरेंट इंटरैक्टिव अपॉर्चुनिटीज क्लासरूम में प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट अ स्टूडेंट दे कैन थिंक. बिकॉज our NEP says that that students के बीच में जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, हॉट्स है, वो डेवलप हो.
What are the high order thinking skills? The high order thinking skills are all these skills, that is the analyzing power. These are the mental powers. तो mental powers क्या है? वो mental powers है analyze करना, synthesize करना, decision making है, and then reflection है, critical thinking है, creativity है, communication है. All these are the high order thinking skills. तो कोई भी information अगर हम provide करें, क्योंकि हम lots of information आज की date में provide करते हैं, वो information actually knowledge creation कब होता है? तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो उसके बेसिस पे जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको ऐड करके हम एट दैट टाइम एनालाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उसके बाद सिंथेसाइज करते हैं, देन डिसीजन मेकिंग होता है और तब हम रिफ्लेक्ट करते हैं और वो जो रिफ्लेक्शन है दैट इज द नॉलेज क्रिएशन. तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टू द नॉलेज क्रिएशन जो प्रोसेस है वो सारे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का. सो हाउ टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी इन द क्लासरूम टू थिंक देम, जो स्टूडेंट्स थिंक करें, एंड ऑफ कोर्स गिविंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. Just a minute. So give responsibility to your students. जब हम responsibility students को देते हैं तो actually वो उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो काम करना चाहते हैं और जब वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो सीखते हैं. So our NEP also emphasizes to involve the students, to give them opportunity to participate in the process of learning. तो उनको कैसे हम इन्वॉल्व करेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेवल का, कितना, कब, कैसे देना है, इट मैटर्स. ये सारे स्किल्स हैं जिससे कि हमें टीचर्स को आज ये जानना चाहिए कि उसको हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. सिमिलरली प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू द कंटेंट. सो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो कैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास जो लर्निंग रिसोर्सेज है या जो मेथडोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज वो यूज कर रहे हैं, उन सबको एक स्ट्रक्चर के रूप में कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. वी आर नाउ एम्फसाइजिंग ऑन द ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग. आफ्टर कोरोना टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट के साथ में बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारे एप्स आए हैं. तो वो कैसे ब्लेंडेड लर्निंग है, सपोज ब्लेंडेड लर्निंग है, तो when we provide opportunity for the online instruction, when face-to-face interaction is there, when so it all depends upon the teacher how a teacher design all these things and they provide the structure to the whole scenario. So ye for the success of each and every student, so it is the responsibility of the teacher. And then in how the teacher engages the students in the process of learning, so providing the hooks. So who I am teaching, what I am teaching, how I will teach, what process of what assessment process I will adopt for evaluation purpose. So all these, it depends upon the teacher. So how a teacher design all these things for the learning of the students. So ये जब students को engage करना है तो वहाँ पे कुछ challenges भी देना, कुछ रिस्क भी देना, ये सारे एक स्किल्स हैं जो टीचर को आनी चाहिए कि हाँ कि वो हुक्स कहाँ पे प्रोवाइड करे, कहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज करे इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. एंड ऑफ कोर्स they must follow the open door policy. What is the open door policy? It is the welcoming the ideas of each and every student in the process of learning. Why? Because student voice matters. तो जहां पे हमने कम्युनिकेशन स्किल की बात की, वहां पे लिसनिंग स्किल भी एक उसका एक पार्ट है कम्युनिकेशन का. तो जब तक लिसनिंग स्किल्स डेवलप नहीं होगी तब तक हम स्टूडेंट्स के आइडियाज, उनके व्यूज, उनकी बातों को हम नहीं सुनेंगे. इवन जब हमारी एनएपी कहती है कि इनोवेशन को प्रमोट करो, क्रिएटिविटी को प्रमोट करो, कैसे आएगा क्रिएटिविटी? वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहाँ से आएगी? When a teacher will provide opportunities in the classroom to think divergently, then reflect on each and every ideas. Even vague ideas should also be welcomed. तो जितने भी ideas हैं उन बच्चों के welcome होने चाहिए, जो भी हमारे learners हैं. So उनकी बातों को सुनना, इसके लिए open door policy, acceptance level को increase करना teacher के लिए बहुत important है आज की date में. Similarly, they must know how to use the whole room. Whole room means using each and every corner of the institution, the learning resources, even the teachers, the जो हमारे teachers हैं या हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है या नॉन टीचिंग फैकल्टी है या जितने भी हमारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो सारे, और इवन जो स्टूडेंट्स है, तो सारे स्टूडेंट्स को प्रोसेस, लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, ये टीचर को आना चाहिए कि हर चीज को वो यूज कर सके जो कि लर्निंग में मैटर करती है.
And of course, they must have power, that emotional feeling, that bondage, the creation of networking. वो जो एक feeling है, जो sensitivity है students के साथ में, वो बहुत important है. क्योंकि जब तक वो sensitivity नहीं होगी, वो जो learning है वो बहुत meaningful नहीं. तो कैसे वो कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखें इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम द बिगनिंग. वो एक जिसमें कहते हैं ना, जो हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है, जो हमारी लर्निंग है या नॉलेज क्रिएशन है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर बिलीफ सिस्टम. जिसको हम मानते हैं, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारा जिसपे हमारा विश्वास है, ट्रस्ट डेवलप्ड है, वहां पे लर्निंग, उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे और वहीं पे नॉलेज क्रिएशन होगा. तो हमारा जो नॉलेज है, जो भी हमारी जो गेन होता है नॉलेज में, वो हमारे बिलीफ से या हमारी इमोशन से, हमारी फीलिंग से वो रिलेटेड है. तो इस तरह की कनेक्शन क्लासरूम में मेंटेन करना टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और कैसे मेंटेन करें, ये स्किल डेवलप करना चाहिए. सिमिलरली, हाउ टू कलर अप द थिंग्स. कैसे हम इंटरेस्टिंग बनाए क्लासरूम को, कैसे कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हो, उसको कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स वहां पे मोटिवेटेड फील करें, एनकरेज्ड हो, एंड दे कम फॉरवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो वो, बिकॉज वी आर ऑलवेज सेइंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट इज अ प्रोसेस, इट इज, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है. उस प्रोसेस को कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. एंड दे मस्ट नो हाउ टू प्रमोट कम्युनिटी इन द क्लासरूम, दैट इज द पीयर लर्निंग, या जिसको हम कोलैबोरेशन या कोऑपरेटिव जो स्ट्रेटजीज है, उसको कैसे हम वहां पे यूज करें. जो सोशल वैल्यूज है, उसको वहां पे डेवलप कैसे हो, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए. वो टुगेदरनेस या एक टीम फीलिंग, आज एक टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है. और हम हर फील्ड में देख रहे हैं जहां पे टीम आते, क्यों टीम चाहिए, बिकॉज जो बेस्ट आइडिया है, वो जब शेयरिंग ऑफ आइडियाज होते हैं, तभी वो बेस्ट आइडिया में कन्वर्ट होते हैं. माई आइडिया, योर आइडिया, व्हेन द आइडियाज ऑफ अदर्स जब वो कंबाइन होते हैं, देन वी गेट अ बेस्ट आइडिया. तो इसके लिए टीम में या टुगेदरनेस, कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज अ टीचर कैन यूज इन द क्लासरूम. कैसे वो टीम को आगे बढ़ा सकती है, या किस तरीके का पेडागोजिकल अप्रोचेस या स्ट्रेटजीज वो यूज कर सकती हैं, जिससे कि ये वर्किंग टुगेदर की जो एक फीलिंग है, वो डेवलप हो पाए. एंड दे मस्ट नो हाउ टू रिकॉर्ड द स्टूडेंट्स अचीवमेंट. स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इट डजंट मीन कि ओनली जो एकेडमिक अचीवमेंट है, बिकॉज आवर एनईपी सेज दैट देयर शुड नॉट बी हार्ड सेपरेशन बिटवीन द करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज. इट मीन्स कि वो जो को करिकुलर जिसको अभी तक हम बोलते थे, वो एक्चुअली करिकुलर एक्टिविटीज के एक पार्ट है, वो करिकुलम का एक पार्ट. तो अब कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है. इट मीन्स कोई भी टैलेंट, कोई भी किसी का परफॉर्मेंस है किसी स्टूडेंट का, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करके रहे. नॉट ओनली उसको रिकॉर्ड करके रखे, बल्कि उसको रिफ्लेक्ट भी उसके ऊपर करे. तो जब फीडबैक दे स्टूडेंट को, तो उसके बारे में, उसके उस टैलेंट को भी वो कैसे मोटिवेट करे, वो नर्चर करे. ये इस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. Please, I request all to mute your microphone. So, कैसे उसकी जो रिकॉर्ड्स है, जितने भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक है, इवन ऑनलाइन मोड में कैसे उसको, ऑनलाइन ई पोर्टफोलियो को कैसे मेंटेन करे. तो और ये सारे जो स्किल्स है वो जरूरी है. एंड ऑफ कोर्स गिव कंट्रोल टू देयर स्टूडेंट्स. जितना भी जो कंट्रोल है, वो स्टूडेंट्स को दे फॉर देयर ओन लर्निंग. इट मींस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. एंड सेल्फ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो वो कंट्रोल कितना देना है, तो उस पर एक स्पेक्ट्रम है. वो स्पेक्ट्रम के मिनिमम कंट्रोल देना है या मैक्सिमम कंट्रोल. व्हेन वी आर गिविंग द मैक्सिमम कंट्रोल टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर ओन लर्निंग, इट मींस वी आर गिविंग देम the control, the deciding power. We are giving the deciding power to the students. They will decide what they want to learn, how they want to learn, किस तरीके से उनका असेसमेंट हो. ये सारी कंट्रोल हम स्टूडेंट्स पे दे दें. तो वहां पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बहुत ज्यादा वहां पे होगा, और वहां पे मैक्सिमम कंट्रोल स्टूडेंट्स का हो जाएगा. और इसीलिए बहुत अच्छी स्लाइड है कि लेस अस मोर देन. So creating the student center context for learning. तो सबसे अभी हम student center learning की बात कर रहे हैं, पूरी एनईपी बात कर रही है student center learning. बट वो जो less us है,
या वो टीचर किस रूप में होगा, उस पर हम एम्फेसाइज नहीं करते। तो रियल फैसिलिटेटर कैसे एक टीचर बन सकता है, ये वहां पे बहुत जरूरी है। इट मीन्स गिविंग कंट्रोल टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो जो स्टूडेंट्स को हम कंट्रोल दे, तो जो कंट्रोल दे रहे हैं वो कहाँ तक होगा, तो इसमें अपकमिंग असाइनमेंट्स क्या होंगे, उसके लिए कंट्रोल दे दिया कि कौन से असाइनमेंट्स उनकी होगी, एक्टिविटीज उनकी कौन सी करनी है, कब करनी है, वो सारा कुछ दे दिया। अपने उनके डेडलाइंस हो, अच्छा इस डेट को आप करना चाहते हो, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी वहां पे हो, इस डेट को वो नहीं कर पाए, ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पे कर सकते। किसी को रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो उनके साथ में उसके साथ कोप अप करना, उनको उस तरीके से पूरा टाइम देना। तो दे डिसाइड देयर ओन डेडलाइंस एंड व्हाट मेथड दे वांट टू बी अडॉप्टेड, कौन सा मेथड यूज किया जाए उनके लिए, पेडागोजी क्या हो, स्टाइल क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या हो, ऑब्जेक्टिव्स वो खुद डिसाइड करेंगे, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीथिंग टू चूज। सेल्फ असेसमेंट, जब असेसमेंट पे आएंगे तो सेल्फ असेसमेंट, व्हाट वी लर्न, उनको खुद पता हो कि हमने क्या सीखा, हमें क्या सीखना है, फर्दर हेल्प हमें क्या मिलना चाहिए, बिकॉज द पर्पस ऑफ असेसमेंट is to find out the gap in the learning and then further designing the activities to fill up those gaps. तो ये पर्पस है असेसमेंट का। तो सेल्फ असेसमेंट उसमें हो और ये सारी चीजों की कंट्रोल अगर स्टूडेंट्स को हम देते हैं, इट मींस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, और यही हमारी एनईपी भी फोकस कर रही है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द गेट ऑफ द बिटन पाथ, इट मींस डूइंग समथिंग डिफरेंट, जो हो रहा है उससे थोड़ा अलग हट करके। तो वो जो अलग हटकर होगा, इट मींस थोड़ी सी डाइवर्जेंस वहां पे आएगी, कोई नयापन आएगा, कोई क्रिएटिविटी आएगी, और जहां क्रिएटिविटी आती है इनोवेशन वही। तो हमारी एनईपी फोकस कर रही है कि इनोवेशन होना है, कुछ नया करना है, समथिंग डिफरेंट, और उसके लिए हमें टीचर्स को ही वो जो हमारा बिटन पाथ है, जो हमारा लेक्चर मेथड है, उस मेथड से जो भी हम स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, समथिंग डिफरेंट, थोड़ा नयापन लाकर हमें भी सोचना और हमें भी करना है। एंड आवर एनईपी सेज दैट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे वो एम्फेसाइज करती है कि स्टूडेंट का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। जब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आ रही है तो एक ऐसी पर्सनालिटी की बात हो रही है जिसका फिजिकल भी हो, मेंटल भी हो, सोशल भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, एक होल चाइल्ड कॉन्सेप्ट की बात है कि जो लर्नर है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो। तो उसके लिए हर पार्ट पे एम्फेसाइज करना टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, उसकी पर्सनालिटी क्या वो कर सकता है। और एजुकेशन का पर्पस भी यही है कि जो ब्रिंगिंग आउट व्हाट इज इनसाइड, तो अंदर जो है उसको बाहर लाना। इट मींस कि जो भी अंदर टैलेंट है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसके कॉम्पिटेंसी है, उसको बाहर लाना एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। तो जब हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इवन स्टूडेंट की जो राइट्स हैं, स्टूडेंट की हेल्थ, उसकी जो वेलबींग है, जब वेलबींग की बात आएगी तो वो कॉन्सेप्ट पूरी उसकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें टीचर्स को यहाँ पे एम्फेसाइज करना है। एंड नाउ द टीचर्स हैव टू डिसाइड। So teachers are free to choose, but teachers are not free from the consequences of their choices. It means कि जो consequence आ रहा है, जो भी strategy हम choose कर रहे हैं, methodology choose कर रहे हैं, जो skills हम choose कर रहे हैं, वो choose करने के लिए teacher free होते हैं। But जो उसके consequences होंगे, जो learning जो students पे होगा, because teachers जो है वो society से directly linked है, तो वो जो भी उसके consequences होंगे उसके लिए वो responsible है। यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी ले रही हूँ, आपको एक लिंक शेयर कर रही हूँ मैं चैट बॉक्स में, आपको क्लिक करके इसको रिस्पॉन्ड करना है। अब अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे स्किल्स डिस्कस किए हैं। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आर यू एबल टू ओपन दिस लिंक?
Yes, ma'am. It is redirecting us. Yeah. It is very much available. So what is there in the on the screen? So it has asked to introduce ourselves, and then I think it's a questionnaire. You can skip everything. You can skip everything. Okay, so they've asked a question, in your opinion, which is the most important skill of a teacher? You can vote on the ideas submitted. So you can add new skill, and you can also vote. So it is upon you, and you can respond more than one answer. So you can vote also, and yes, there's someone has written this patience. Good. So the others can vote for patience also. Open door policy, good. I received one vote for patience. Open to new ideas. Yes, I'm receiving. To listen her students patiently. Easily approachable. Good. Kind. Nice. My screen is visible to you all? Yes, ma'am. So you can see here, kind, patience, open to new ideas, open door policy, listen to her students. Teacher should be able to connect with students so that they can exchange their views comfortably. Okay, thanks to all of you for participating. Now I'm coming to my next slide. Thank you. My slides are visible? Yes, ma'am, fully visible. Okay, so now we will discuss on the assessment. Assessment, it is actually enabling process. It is useful, desirable, and the ultimate purpose of assessment is to help the students in the learning process. So helping students to learn, and it is also a process of reporting on the student progress. That's why we use progress report of the student. Progress report, it means the teacher has to report on the progress of the students, how the student is progressing, and a way of making decision about the teaching, that what strategies should be used or what method or alternative activities should be used. We generally use the term remedial in education. आप लोगों ने भी सुना होगा रेमेडियल वर्ड, जबकि रेमेडियल वर्ड एज सच लर्निंग में नहीं आना चाहिए एजुकेशन में, बिकॉज रेमेडी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, वी डोंट इवन हम डायग्नोज भी नहीं करते हैं. एक्चुअली वो लर्निंग का एक प्रोसेस है, और लर्निंग में हम स्टूडेंट की उसकी लर्निंग में हेल्प करते हैं कि वो कैसे सीख सकता है,
क्या तरीके से सीख सकता है, कौन सी स्ट्रैटेजी से सीख रहा है, या हम कैसे चेंजेस अपनी मेथडोलॉजी या पेडागोजी में लेकर के आए। तो इसलिए रेमेडियल नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्टरनेटिव प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज, कोई भी अल्टरनेट प्लान हम करें एक्टिविटीज का, जिससे कि हम उसको सिखा सकें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा इफेक्टिव असेसमेंट का हम देख रहे हैं, दैट द असेसमेंट शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, दैट मस्ट फोकस ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसको हम ऑब्जेक्टिवली उसको हम असेस कर सकें। It should be flexible in nature, acceptable by the students. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जहां आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी स्टूडेंट्स की, तो वहां फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, कंस्ट्रक्टिव, इट मींस इट विल सजेस्ट द फर्दर एक्टिविटीज, क्या करना है और कैसे जो भी नॉलेज हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, उसमें वो कैसे और ज्यादा हेल्पफुल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो एंड थॉटफुल हो। इट मीन्स ऐसा असेसमेंट होना चाहिए कि वो एक्चुअली टेस्ट करे वो सिचुएशन में कि स्टूडेंट कैसे सोच रहा है, और सोचने के बाद वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग वहां पे टेस्ट करेंगे या न्यू सिचुएशन में उसके थिंकिंग स्टाइल टेस्ट करेंगे, वो असेसमेंट का तरीका सही होना चाहिए, और इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो हमारी ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, जिसमें हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्लासिफाई किया गया, वो अब चेंज होकर के उन्होंने जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रखा है वो रखा है क्रिएटिंग। इट मींस स्टूडेंट्स को कुछ क्रिएट करना चाहिए। क्रिएशन मींस उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है। इवन हमारी जो 360 डिग्री असेसमेंट है वो फोकस की गई है हमारे NEP 2020 में। उन्होंने कहा है कि असेसमेंट शुड बी 360 डिग्री। तो वो 360, what does mean this 360 degree? It means the all the raters, all the stakeholders, they will be involved in the process of assessment. तो जितने भी stakeholders हैं उनको assessment में उनको involve करना। वो external sources भी होंगे, या self assessment भी है, peer assessment भी है, parent assessment भी है, teacher assessment भी है, management assessment भी है। तो जितने भी stakeholders हैं वो सारे असेसमेंट के इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। तो कैसे 360 डिग्री जो असेसमेंट है हमारा, उसको हम एक सक्सेस कैसे हो सकता है, उसका क्या तरीका है। तो इट मस्ट कन्वे why it means what is the purpose of assessment, हम वो पर्टिकुलर असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, ये एक कन्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नो द सब्जेक्ट, किस चीज का असेसमेंट हो रहा है, उसको जितना ब्रीफ रख सके, कॉन्फिडेंशियल हो उतना, और रेटर्स पता हो कि हमें कौन रेट करने वाला है। अगर हमें ये पता होगा कि हमारा इवैल्यूएटर कौन है, तो उसके पर्सपेक्टिव में वैसा ही डेवलपमेंट होगा। एंड वैलिड पैरामीटर शुड बी यूज्ड। तो जो हमने कहा कि पर्पसफुल हो, ऑब्जेक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, तो उसके लिए जो पैरामीटर्स चुने जाए वो पैरामीटर्स बहुत वैलिड होने चाहिए। दैट पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर जो हमारा स्ट्रीम है उससे रिलेटेड हो, एंड दे मस्ट हैव अ फॉलो अप प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Why? Because the purpose of assessment is to help the students in achieving the goal of that particular thing. तो जब उनको help करना है, it means follow up plan होगा कि असेस करने के बाद ये लर्निंग गैप है, एंड उस लर्निंग गैप को कैसे फर्दर फुलफिल कर सकते हैं। तो वो तो प्लानिंग द फर्दर अल्टरनेटिव एक्टिविटीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें सेल्फ असेसमेंट में इट मींस कि वो खुद असेस करेंगे कि कहाँ उनको और हेल्प की जरूरत है, कहाँ उन्होंने कंप्लीट कर लिया, और कहाँ उनको ज्यादा हेल्प की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस उनको चाहिए। तो द स्टूडेंट विल डिसाइड अबाउट द हेल्प। और इसके अलावा भी अगर कोई है, हाउ यू मेक दिस बेटर, अगर कोई आपको ऐसा लगता है, ये लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, आप यहाँ से आप इसको सोच कर रखिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑल दीज आर अबाउट द टीचिंग स्किल्स ऑफ द टीचर्स in view of, in the light of NEP 2020. Now let us discuss about the learners for the 21st century. वो learners आज की डेट में 21st century की जो बात हो रही है लर्निंग की, उसमें learner के characteristics क्या है। तो एक हैंड पे उनका जो नॉलेज है, जो नॉलेज की जब बात कर रहे हैं तो इट मींस वो इंटरडिसिप्लिनरी भी होंगी, ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है, थीम रिलेटेड भी है। सेकंड पार्ट में उनके कैरेक्टर बिल्डिंग का भी है कि हाउ वी बिहेव, दो जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है उसके साथ में, या हाउ द स्टूडेंट कनेक्ट टू द अदर्स, और जो उनका इंगेज विद द वर्ल्ड है, उनका किस तरीके से उनका है, उनकी क्यूरियोसिटी, माइंडफुलनेस, उनकी करेज, रेजिलियंस, एथिक्स, ये सारी क्वालिटीज है। एंड जो थर्ड एस्पेक्ट है दैट इज द स्किल्स, हाउ वी यूज व्हाट वी नो। तो जो भी हमारी स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज है, उसको कैसे यूज करते हैं। और यहाँ पे 4C की बात की गई है। तो ये
क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। और यही हमारी जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, इसके लिए एम्फेसाइज कर रही है एनईपी कि ये होना चाहिए। तो जो एक्चुअली जो 21st सेंचुरी लर्नर्स है, उनका जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड हो। सेल्फ डायरेक्टेड इट मींस, जो हमने कंट्रोल की बात की थी स्पेक्ट्रम की, गिव कंट्रोल टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर लर्निंग, सो तो वो सेल्फ डायरेक्टेड हो। एंड दे शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, इट मींस उनको लर्निंग की प्रोसेस को स्टॉप नहीं करना है, वो कंटिन्यूड होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हो। दे शुड बी कोलैबोरेटिव कम्युनिकेटर्स। तो जो कोलैबोरेटिव कम्युनिकेटर्स की मीन्स है कि जो को क्रिएशन ऑफ नॉलेज है, जहां पे कोलैबोरेशन की बात आती है, टीम की बात आती है, वो सारे उनकी होनी चाहिए। तो वो कम्युनिकेटर्स भी हो, कम्युनिकेट भी कर सके। इंफॉर्मेशन मैनेजर, अभी जो इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्पेशली जब हमारा ऑनलाइन आया या जब से हमने इंटरनेट यूज करना शुरू किया है, तो इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं। तो हाउ टू मैनेज द इंफॉर्मेशन, वो कैसे मैनेज करते हैं, या फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज जनरेशन, वहां तक कैसे होते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो उनसे ये एक्सपेक्ट की जाती है 21st सेंचुरी लर्नर्स को कि वो एक मैनेजरल स्किल्स जो है स्पेशली फॉर द इंफॉर्मेशन, वो उनके हो। दे मस्ट नो हाउ टू अडेप्ट, वो कैसे अडेप्ट करें डिफरेंट सिचुएशन में, उनकी एडजस्टमेंट कैसे हो, वो कर सकते हो। एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ all the things, all the issues related. They should be performer, it means जो जिस भी एरिया में वो जाए, they must know how to perform in that particular area. जो हमने अभी ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात की, क्रिएशन की बात की, तो ये जो हाईएस्ट लेवल है उस ऑब्जेक्टिव का, दैट इज टू क्रिएट समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग। तो लर्निंग में जो जब तक वो प्रोड्यूस करेंगे, इट मीन्स कि वो परफॉर्म करेंगे। तो वो जो परफॉर्मेंस, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस जो है उसमें आए। एंड ऑफ कोर्स दे मस्ट बी हेल्दी ह्यूमन। जब कोरोना पीरियड, स्पेशली कोरोना पीरियड के बाद में, ये हमें इंपॉर्टेंस पता लग गई है कि हेल्थ क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो जो हेल्दी होगा वही वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा सोसाइटी में। तो जो हम नेक्स्ट जनरेशन का जो हमारा है, या जो हम सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, इवन जितने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उनका जो अल्टीमेट एम है इज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोसाइटी। वो सस्टेनेबल सोसाइटी में हेल्दी ह्यूमंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो हेल्दी ह्यूमन हो, एंड ऑफ कोर्स दे मस्ट बी विजनरी लीडर्स। उनकी जो दूरदृष्टि है वो वैसे ही डेवलप होनी चाहिए। वो लीडर क्वालिटी, वो जो टीम कंट्रोल है, और जिस तरीके से एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, और जो आगे टीम को लेकर जाने की बात है, उस तरीके के हमें लीडर्स चाहिए। एंड अल्टीमेटली दे मस्ट बी केयरिंग ग्लोबल सिटीजन्स। और अभी हमारी यूजीसी से भी ग्लोबल सिटीजनशिप की एक डॉक्यूमेंट आ चुकी है। तो वो कितना ग्लोबल सिटीजन, उनको कैसे डेवलप करना है, 21st सेंचुरी के जितने भी हमारे लर्नर्स है, वो सारे ग्लोबल सिटीजन्स होंगे। दे विल बी फ्लेक्सिबल एंड क्रिटिकल थिंकर्स। जब क्रिटिकल थिंकर्स होंगे एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ कोर्स, तो रिफ्लेक्टिव भी होंगे। तो ये दीज ऑल आर द स्किल्स रिक्वायर्ड इन द 21st सेंचुरी learners. What are these 21st century learners skills? All these skills are the abilities that need to succeed in careers during the information age. So we are in the एज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन एज में किसी भी करियर को, किसी भी प्रोफेशन में सक्सीड करने के लिए ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। व्हाई? बिकॉज आज की जो क्लासरूम है, और जो वो है सारे विदाउट वॉल्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन, interactive learning styles, multilingualism, even our NEP also focuses on all these things, problem-based learning and all that. So for the skills of 21st century, as per the World Economic Forum 2015, जो 21st century skills हैं, वो उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। This is the foundational literacy, the competencies and the character qualities. So ये और ये सारे lifelong learning perspective में इन्होंने लिया है। So the 3 skills are the learning skills. It means they are talking about the 4 C's, that is the critical thinking, creativity, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो 4 C's हैं, वो जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज क्रिएशन हो रहा है, जो लर्निंग हो रही है, वो जो नॉलेज क्रिएशन है, वो इन्हीं 4 स्किल्स से है। और ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, जिसमें एनालिसिस है, सिंथेसिस है, डिसीजन मेकिंग है एंड रिफ्लेक्शन है।
सिमिलरली लिटरेसी स्किल्स, तो ये IIMT कहते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी, जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फैक्ट्स है, फिगर्स है, या कोई स्टैटिस्टिक्स है, या जो डेटा है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, एंड देन मीडिया लिटरेसी, कौन सी मीडिया को यूज कर रहे हैं, वो हमारा इवन कोई हमारा स्किल भी उससे एसोसिएटेड हो सकता है, जिस मीडिया को यूज करके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज क्रिएशन कर रहे हैं। एंड देन टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, जो भी स्किल्स है एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजी, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, वो स्किल्स कैसे डेवलप हो रहा है लर्नर्स में। इन एडिशन टू लर्निंग स्किल्स एंड लिटरेसी स्किल्स, देन द लाइफ स्किल्स, दैट फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, कैसे टीम मेंटेन करें, टीम, हाउ टू बिल्ड अ टीम, how to maintain a team, how to progress in a team. Then initiative skills, कैसे शुरुआत करते हैं, productivity जो creation की बात है, and of course the social skills. तो ये सारे skills हैं जो आज की learners में या 21st century के learners में ये चाहिए. They should be self-motivated learners, collaborative in nature. They should reflect upon the knowledge creation or any content. They must be curious, then persistent, and they have the skill of risk taking, and also they about the resilience. So all these skills are required for the 21st century learners. Now the dynamic learning environment. We discussed about the teaching skills, then the skills required for the learners, and then the teaching environment, the learning environment. It is not the teaching environment, it is actually the learning environment, because when there is teaching, there is learning. Without learning, there is no teaching. That's why we call that learning environment. What is a learning environment? All kind of activities or all kind of components during the process of learning, which are used in the process of learning, is known as learning environment. So it must be typically constructive in nature. It means it must construct something. The students should get opportunity to construct something, and the students, they are involved in the process of learners. They are engaged in making the sense of the learning. जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है, जो मीनिंगफुल लर्निंग है, वो वहाँ पे होती है, जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स. एंड वो रफली इसको हम कह सकते हैं कि these are the places where teaching and learning takes place. तो जब प्रोडक्टिव मैनर में जब टीचिंग लर्निंग होती है, इट मींस द कंपोनेंट्स इंक्लूड the learner characteristics, the content, the resources, the assessment technique, the evaluation, the learner support services, even the skills, the teaching strategies. So all these include the learning environment. और इसको हम कहते हैं कि ये बहुत ही conducive learning environment है. तो conducive learning environment क्या होगा? जो लर्निंग एनवायरनमेंट्स है वो स्टूडेंट सेंटर्ड भी होते हैं, नॉलेज सेंटर्ड भी है, असेसमेंट सेंटर्ड भी है, एंड कम्युनिटी सेंटर्ड भी है. बट द न्यू थिंग इज द डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट. व्हाट डज इट मीन? डायनामिक मीन्स जो स्टैटिक नहीं है, जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं. सो डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज. समथिंग कुछ नया हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है. चेंज, activity, and progress. So the three main components of dynamic learning environment is the change. It means something different from the traditional. कुछ नया है उस learning environment में. And then activity. It means engagement of the students, involvement of the students in the process of learning. जहाँ पे students को participate करना है, उनको engage रहना है. And progression. तो कहीं progress दिख रही हो जहाँ पे, वहीं पे learning, ये तीन dynamic learning environment हम इसको बोल सकते हैं. So it is intentionally designed by the teachers to meet the needs of all the students. It means it is inclusive in nature, while challenging them to enhance existing skills. जो भी उनके interest है, skills है, उनकी understandings है, या जो भी नया बन रहा हो, कोई भी ये चीजें बन रही हो, या जो है उसको enhance करना, जो skills है, उनके interest है या उनका knowledge है, जो भी चीज है. तो ये तीन characteristics इसके हैं. So why to make a more dynamic environment? कैसे हम उसको बना सकते हैं? तो सबसे important thing is the teacher's voice. तो वो जो communication skill of the teacher है, वो सबसे यूजफुल एंड पावरफुल टूल है. तो वो कम्युनिकेशन में, इवन हमारे लिसनिंग में. सो गिविंग कंट्रोल टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर लर्निंग, वो भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए ड्यूरिंग द क्लासरूम कि हम एक पॉज
एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसमें स्टूडेंट सोचे और वो खुद कंट्रोल करें अपनी लर्निंग का। तो वो कम्युनिकेशन का लिस्टिंग स्किल या जितना भी आपने स्किल्स अभी मेंशन किया था उसमें भी आपने इनडायरेक्टली जो स्टूडेंट टीचर्स के इसी कम्युनिकेशन स्किल को एम्फसाइज कर रहा था। तो योर वॉइस इज अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग द डायनामिक एनवायरनमेंट बी ऑर्गेनाइज्ड। हमने पहले भी टीचिंग स्किल्स में देखा ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनाइज करना एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू ऑल दिस थिंग्स, जो स्ट्रेटजीज है, मेथड्स है, कंटेंट्स है, कब कहाँ किसको ऑनलाइन ऑफलाइन पीडीएफ देना है, वीडियो है, ऑडियो, जो डिफरेंट इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोवाइड सक्सेस एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, सो इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ऑफ कोर्स सरप्राइज देम। तो डूइंग समथिंग ऐसा कुछ करके जब भी सरप्राइज मिलता है व्हाट हैपेंस, वी फील, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है जब भी सरप्राइज मिलता है। तो सरप्राइजिंग द स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस इज लर्निंग इज, वहां पे भी उनको वो अच्छी फीलिंग होगी, वो लर्निंग ज्यादा होगा। सो ट्राई न्यू थिंग्स एंड गिव इट अ स्ट्रक्चर। सो अल्टीमेटली द टीचर्स हैज टू डिजाइन all these things and provide a structure and involve the students in that the process of learning so that they feel बहुत comfortable feel करें और वो motivated हो और उनका progress हो सके। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था वो लर्निंग एनवायरनमेंट का, दैट इज द फॉर्मल लर्निंग सिस्टम, इनफॉर्मल लर्निंग सिस्टम एंड नॉन फॉर्मल लर्निंग सिस्टम। नाउ क्या ऐड हुआ है डायनामिक लर्निंग सिस्टम में? स्टूडेंट नेगोशिएशन। आई वांट टू लर्न दिस, ये मेथडोलॉजी आप यूज करो, दिस काइंड ऑफ असेसमेंट शुड बी गिवन। सो स्टूडेंट नेगोशिएशन का एक पार्ट वहां आया है, वो शेयर्ड कंट्रोल आया है। वी आर नाउ गिविंग कंट्रोल टू द स्टूडेंट्स, उनकी क्रिटिकल वॉइस वहां पे इंक्लूड हुई है, अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो देयर एंड पर्सनल रिलेवेंस। तो ये सारी चीजें ऐड होकर के डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट में वो कन्वर्ट हुई है। दिस इज द टास्क बेस्ड लर्निंग, दैट इज ऑल्सो अ पावरफुल लर्निंग एनवायरनमेंट। इट मीन्स some creation, some productivity, किसी तरह का टास्क देने से क्या होगा, चेंज होगा एनवायरनमेंट, कुछ जो हमारा ट्रेडिशनल है वो चेंज होगा, उसके साथ साथ हमारी प्रोग्रेस भी वहां पे आएगी, कुछ प्रोडक्शन होगा, क्रिएशन होगा, तो स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट होगा। तो ये टास्क बेस्ड भी एक लर्निंग एनवायरनमेंट। नाउ कमिंग टू द ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट focus on the meaning and learning and growth is there, support for each person, it means वहां पे collaboration cooperation भी है, then structure for each person and जो collaboration है that encourage adds the values, energy, how to manage the energy in the classroom, it is a very important skill of a teacher। जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको कैसे नर्चर करें, कैसे मेंटेन करें, कैसे उसको राइट डायरेक्शन में हम लेकर जाए, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन एनवायरनमेंट, इट अलाउज द इमीडिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपसे एक एक्टिविटी ली थी, उसमें इमीडिएट फीडबैक आ रहा था, आप सब लोग देख रहे थे कि आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो वो जो इमीडिएट फीडबैक है, ये जो कल्चर है, ये ऑनलाइन में बहुत हमारे लिए एक हेल्पफुल है। एंड देन द स्टूडेंट्स कैन बी मेड मोर क्रिएटिव इन देयर लर्निंग एंड ग्रोथ। तो जिस एनईपी जिसको फोकस कर रही है कि स्टूडेंट शुड बी क्रिएटिव, उनको कैसे क्रिएटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनको क्रिएटिव कैसे बनाए, तो दिस ऑनलाइन एनवायरनमेंट इट प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर लर्निंग एंड ग्रोथ एंड टू मेक देम मोर क्रिएटिव इन नेचर। तो मोर क्रिएटिविटी हम प्रोवाइड उनको कर सकते हैं। व्हाई, कैसे? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो वो एप्लीकेशंस, वो सारे एप्स यूज करके, वो उस तरीके का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके, टीचर इज द हीरो और वो किंग है अपने क्लासरूम का, एंड ही और शी कैन प्रोवाइड सक्सेस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। तो ऑनलाइन जब हमारी है तो क्रिएटिविटी और ज्यादा नर्चर कर रही है, एंड दे कैन यूज वेराइटी ऑफ मेथड्स, सिमुलेशन, गेम्स, वीडियो, स्लाइड शो, फोटोज, डायलॉग, नरेशन, टेक्स्ट, इमेज। तो कितनी भी फ्रीडम है, वो सारी चीजों को कोलैबोरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। What is necessary is that the teachers must know the various types of apps which can be used in the process of learning, and they must know how to observe continuously। जब भी वो पढ़ा रहा हो या वो कोई कंटेंट में है तो वो कंटिन्यूअसली उसको कैसे ऑब्जर्व करे, बिकॉज द रोल ऑफ टीचर इज नाउ चेंजिंग एज अ फैसिलिटेटर फ्रॉम द बैक, लेस अस, कैसे उनको सपोर्ट करे टीचिंग में, वो जाने और वो समझे। सो दे मस्ट नो द लर्निंग स्टाइल ऑफ देयर स्टूडेंट्स, वो कैसे लर्न करते हैं।
ग्रुप में लर्न करते हैं, टीम में लर्न करते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, पेयर एंड शेयर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हाउ दे लर्न. दैट्स व्हाई नो योर स्टूडेंट्स, जो हमने केवाईसी की बात की थी, नो योर चाइल्ड और नो योर स्टूडेंट्स, वो कैसे लर्निंग स्टाइल उनकी क्या है, वो कैसे सीखते हैं. एंड द टीचर शुड नो हाउ टू अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स. appreciation is a powerful tool for learning. जहां भी appreciation होता है वहां learning ज्यादा होता है. तो how to give the feedback to the students, how to report the students about their progress, how to report the parents about the progress of their children. तो ये सारी वो feedback के words क्या है, वो पावरफुल वर्ड्स कौन कौन से और कैसे अप्रिशिएट करना है, कहाँ करना है, टीचर शुड नो दैट. सो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी या अभी जो 21st सेंचुरी स्किल्स है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो दिस द टेक्नोलॉजी इट हैज एक्चुअली इंक्रीज द pedagogical autonomy of the teachers. Pedagogical autonomy, pedagogy, it means every activity in the process of teaching and learning, जो भी टीचर्स यूज कर रहा है किसी भी तरह की एक्टिविटी, वो सारी pedagogical approaches. Pedagogical autonomy, it means we are free to use the resources, the strategies, the techniques, कोई भी चीज हम यूज कर सकते हैं, एप्स यूज कर सकते हैं. So actually जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, teachers can do wonders to manage their learners. So teacher must know how to manage the learning in the classroom. लर्निंग को कैसे मैनेज करें, को क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैसे हो, वो कॉपरेशन, सोशल वैल्यूज कैसे डेवलप हो. तो वो मैनेजर्स, एज ए मैनेजर्स टीचर्स को आना है. तो डिफरेंट एप्स वो यूज करके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ द टीचर्स and various, or the intelligence of the teachers and various apps, miracles can happen. तो ये कैसे करना है, ये pedagogical autonomy of the teachers जो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है. सो एक highly effective learning environment कौन सी होंगी, where the student asks the questions or the good questions. Idea come from a divergent sources. That's why we emphasize on the open door policy. Then classroom जो वो है वो connected community एक हो जाए, पर्सनलाइज्ड वैरायटी ऑफ क्राइटेरिया वहां पे हो. लर्निंग इज पर्सनलाइज्ड, लेकिन वहां पे क्राइटेरिया वैरायटी हो. असेसमेंट जो पर्सिस्टेंट हो, ऑथेंटिक हो, ट्रांसपेरेंट हो, ब्लेंडेड हो, एविडेंस बेस्ड हो, एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑल दैट, कंस्ट्रक्टिव हो. और ये जो क्राइटेरिया जो सक्सेस का हो, दैट इज शुड बी बैलेंस एंड ट्रांसपेरेंट. और देयर शुड बी कांस्टेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्निंग और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रैक्टिस. एक एक्टिविटी मैं यहाँ पे ले रही हूँ. I've sent this link in the chat box. Is it clear? Yes, ma'am. It's still loading, but Okay. yes, it's here. Okay. So you just click on this and then respond. Hmm. Ma'am, please unmute. Vatsala, ma'am, please unmute. Yes. I'm sharing the screen. Just a minute. Okay. There were just 2 questions. Yeah. So you have to respond for each. First question is, learning is related to, and the main component of EL is. Learning is related to teaching, learning, assessment technique, or mastering the content.
And the male component of EL is reflection, experience, activity, or assessment. आप लोग respond कर रहे हैं? Yes, ma'am. Good. पहले के participants के भी इसमें responses हैं. Yes, I have received the responses. Yeah, good, nice. I will wait for a few seconds for others to respond. Okay, for the first question, funneling is related to most of you, 46%, they responded it is related to learning, followed by teaching, then assessment technique and mastering the content. Whereas for the main component of EL is maximum percentage has responded it is related to experience, followed by reflection, then activity, and then assessment. By the way, you can see here for the first question that it is related to learning. Discuss करूं कि क्यों ये है. What do you mean by EL? EL क्या हुआ? Effective learning, ma'am? No. Experience learning? It is not experience learning. It is actually Environmental learning? No, it is not environmental learning. It is actually experiential learning. Experiential learning, our NEP जो है वो focus कर रही है for the experiential learning. And even teachers को training देनी है how to use these strategy in their classrooms. तो यहाँ पे experiential learning है वो. Anyway, so first जो है funneling. What is the meaning of this funneling? And you have responded, many of you have responded that it is related to learning. It is actually fun while learning. Fun while learning. Who will design this concept? कौन design करेगा? Teacher. कि fun हो during learning. जब fun रहेगा learning में, जब आनंद आएगा तो वो learning definitely meaningful होगी, permanent होगी, effective होगी. तो वो fun वो क्या आए, वो जो designing करनी है वो कौन design कर रहा है? वो teacher design कर रहा है. It means it is related to the skill of a teacher. So it is related to the teaching skill. This funneling. So fun while learning is actually funneling. Then when we come to the experiential learning, we will discuss experiential learning in detail in the next slide. So मैं इसको यहाँ पे रोक रही हूँ, मैं next slides पे आ रही हूँ. ये engagement है जो कि मेरे presentations में generally रहता ही है. कुछ online mode में participants के लिए. So coming to the next one, that is the collaboration in learning. Generally ये जो हमारी NEP है वो focus कर रही है collaborative approaches use करो. So what is collaboration और collaboration कैसे हम learning में इसको use करना कितना important? So what is collaboration? अगर हम इस word में दें तो it is an approach. So a way of dealing something, that way of approaching. तो वो जब approach करने को collaboration बोल रहे हैं, और and then definition हम सब लोग जानते हैं, that is the two or more people working together in pursuit of shared collective bounded goal. It means when we are talking about the collaboration, we are talking about the bounded goal. Bounded goal कैसे है वो आगे हम discuss करेंगे इसको. So why to collaborate? What is the purpose of collaboration? To achieve higher levels of performance. तो higher achieve जो भी हमारा performance का level है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, betterment के लिए, improvement के लिए we collaborate with others. So what are the main components of collaboration? अगर ये डाले तो इसके जो principles हैं या जो systems हैं जो working together होते हैं on the basis of communication, cooperation, coordination, collaboration. तो जो initial stage है that is the cooperation, that is the helping others. So जब दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, उनका अपना ऑब्जेक्टिव है, अपने विजन है, उसको अचीव करने में मैं हेल्प कर रही हूँ, दैट इज कॉपरेशन. बट जब हमारा आपका विजन एक हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, और जब हम वर्क करेंगे टुगेदर, दैट इज कोलैबोरेशन. इन द मीन वो कोऑर्डिनेशन आ जाता है. सो बट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज 3 C's. तो इसके लिए हम ये 3 C's के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कोलैबोरेशन को जब हम समझते हैं, इट इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज,
इट इज एक्चुअली जो कम्युनिकेशन बेस्ड है, या इसमें जो रिजल्ट है वो जब दोनों का मिलकर बेस्ट आइडिया जब निकलना होता है तभी इस पे होते हैं। कुछ इसके टूल्स हैं जिसमें इक्वालिटी है, टीम वर्क है, कमिटमेंट है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, लव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे इसके जो कुछ पार्ट्स हैं जो कि इसके कंपोनेंट्स है कोलैबोरेशन के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए। इसके कुछ कोर वैल्यूज भी हैं। बट इसमें जो टीम बिल्डिंग की जब बात आती है तो देयर इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, जो कि एक दूसरे के ऊपर होता ही होता है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो देयर। तो हमारी इंटरडिपेंडेंस है, बट मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी है। तो मिलजुल कर हमें काम करना है। प्रोमोटिव इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे को जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं तो प्रमोशन के लिए करते हैं, एक प्रोग्रेशन वहां पे रहता है। एंड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, जब भी 2 से ज्यादा लोग होंगे कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, ये जनरल रूल है। और टीम बिल्डिंग का भी रूल है कि कॉन्फ्लिक्ट है, बट देयर इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन। वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रुप बिल्डिंग का, टीम बिल्डिंग का, वो आगे भी मैं देखूंगी। एंड देन ग्रुप प्रोसेसिंग, तो जब वो ग्रुप बन गया तो वो कैसे प्रोसेस करता है, आगे जाता है फॉर द शेयर्ड विजन, फॉर द कंबाइंड विजन, फॉर द जो वो बाउंडेड गोल है, उसके लिए सारा वो ग्रुप प्रोसेस करता है। एक एक्टिविटी है, मैं ये नहीं ले रही हूँ, टाइम भी नहीं है। तो नेक्स्ट में हम आते हैं कि जो कोलैबोरेशन और कॉपरेशन है, ये इसमें क्या अंतर है। जो हमारा कोलैबोरेशन है दैट इज गोल ओरिएंटेड एंड वेरी स्ट्रक्चर्ड इन नेचर, whereas जो कॉपरेशन है दैट इज अपॉर्चुनिटी ड्रिवन। जब हमको मिल गया, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं इनसे कुछ करके कॉपरेशन ले सकती हूँ, देन इट इज वेरी अपॉर्चुनिटी ड्रिवन एंड वेरी इनफॉर्मल इन नेचर एज कंपेयर टू कोलैबोरेशन। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे होंगे, कॉपरेशन इट मीन्स हमारे अपना विजन है, आपका अपना विजन है, थर्ड पर्सन का अपना विजन है, उसमें हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं टू अचीव योर विजन। जो आपका विजन है उसको अचीव करने में हम मदद कर रहे हैं। बट व्हेन वी कोलैबोरेट, हमारा कंबाइंड विजन हो जाता है, वो कंबाइंड हो जाता है एंड वी वर्क टुगेदर टू अचीव दैट कंबाइंड विजन, जो भी है हमारा, उसको हम अचीव करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। सपोज आज हमारे आईआईएमटी का एक अपना इनका एक टारगेट है, ये एफडीपी कराना। इसमें कॉपरेशन हमारा हो सकता है कि मैं कॉपरेट कर रही हूँ, ओके, जो भी और भी जो रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं सारे कॉपरेट कर रहे हैं टू अचीव देयर विजन। बट अगर हमारा कोलैबोरेशन होगा तो हमारे बीच एक एमओयू होगी कि हम आपको इसमें करेंगे, हम ऐसे मदद करेंगे, वो ऐसे करेंगे, आप ये करोगे, मैं ये करूंगा, ऐसा ऐसा हम आपस में करेंगे। देन हमारा वो कोलैबोरेशन हो जाएगा, शेयर्ड विजन हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों चीजों में, कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोलैबोरेशन, व्हाई टू कोलैबोरेट, क्यों हम कोलैबोरेट करें? बिकॉज वी शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी करो हम भी कर लेते हैं। तो जो हमारी अकाउंटेबिलिटी वहां हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है, तो अकेला नहीं होता है। ये टाइम भी हमारा बचाता है, सेव करता है टाइम को। इसमें हमारे शेयर्ड स्किल्स हो जाते हैं, पर्सपेक्टिव शेयर हो जाते हैं, हमारी एक्सपर्टाइज किसी में है, आपकी एक्सपर्टाइज किसी में। व्हेन वी कोलैबोरेट हमारी एक्सपर्टाइज शेयर होगी, देन जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। डेफिनेटली जब भी हम कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा। जो हमारा नेटवर्किंग है वो हमारा सोशल नेटवर्किंग हो जाएगा। वी शेयर एंड सपोर्ट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हमारी होगी। इवन जो हमारे प्रॉब्लम्स जो भी हमारे इसमें है, जो बिल्ड करेंगे, जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा। सो इसलिए इन सारी चीजों को देख करके कोलैबोरेटिव अप्रोच को हमारी एनईपीयू ने भी बहुत ज्यादा फोकस किया है को कोलैबोरेशन हो। यहाँ पे एक एक्टिविटी है मैं लेना चाह रही थी, वो ये था कि किन लेवल पे हमारा कोलैबोरेशन होना चाहिए, किस किस स्टेज पे कोलैबोरेशन होना चाहिए, बाद में मैं देखूंगी। तो कुछ कोर इसके स्किल्स है कोलैबोरेशन की, वो है जैसे शेयर है, टीम वर्क है, ट्रस्ट, इंस्पिरेशन, या एक्सचेंज है, असिस्टेंस है, सक्सेस है। एंड जो कुछ कुछ स्किल्स है इसके, इट इंक्लूड्स द कम्युनिकेशन, जो हमने पहले भी बात की, इंक्लूडिंग द लिसनिंग स्किल्स, इवन द conflict management, respect for the ideas of the others, जो open door policy है, या reliability है, या अपनी accountability है, work accountability, इन सारी चीजें जो है ये इनकी कुछ skills है। तो ग्रुप जब भी ग्रुप बनता है या टीम बनते हैं, जब भी हम इसमें काम करते हैं, तो टकमैन ने उसका एक प्रोसेस दिया है कि स्टेजेस दिए हैं कि ग्रुप डेवलपमेंट कैसे होता है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो कैसे ग्रो करता है वो ग्रुप, कैसे ग्रो करता है, उसी में हमारी कन्फ्लिक्ट आता है। और कन्फ्लिक्ट
रिजोल्यूशन भी उसका एक पार्ट होता है जब हम प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं, उसके बाद में वो रिजल्ट को डिलीवर करता है। तो कमिंग जो हमारी टीम बिल्डिंग की है या कोलैबोरेशन का जो अप्रोच है, फर्स्ट स्टेज इज द कमिंग टुगेदर। वो कमिंग टुगेदर कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक दूसरे के गोल्स को हम शेयर भी करते हैं। जब तक शेयरिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट, शेयरिंग एंड ट्रस्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं फॉर कोलैबोरेशन। तो वो जब कमिंग टुगेदर होगा तब भी कम्युनिकेशन के बेसिस पे होगा, क्या क्या चीजें होंगी उसमें जिसमें हम एक दूसरे के विजन को देखेंगे, शेयर करेंगे आइडियाज को। एंड देन स्टेइंग टुगेदर, जब स्टेइंग टुगेदर होगा यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारे आइडियाज जरूरी नहीं है कि 100% इमीडिएटली हम एक्सेप्ट करें, तो जब हमारा एक्सेप्टेंस नहीं होगा वहां पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद फिर वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा, उसके बाद टीम बिल्डिंग होगी और उसके बाद कंबाइंड आइडिया हमारा हो जाएगा। उसके लिए हम सब काम करेंगे और फिर जब हम उसको अचीव करते हैं, ग्रोइंग टुगेदर, दैट इज द काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। ये एक हमारी एक्टिविटी है। यहाँ पे एक्टिविटी ले लूं या आगे चलूं? ले लूं? ओके, थैंक यू। एक एक्टिविटी है, थोड़ा जल्दी मैं लेती हूँ उसको, मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। यस, आपको दिख गया होगा। क्या है ये एक्टिविटी? कोलैबोरेशन की एक्टिविटी है। Yes, ma'am, it is visible. कोलैबोरेशन, Collaboration. ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। My screen is visible? Yes, So, ma'am, it is visible. which type of collaboration you like the most? मेरे लेक्चर्स में मेरे रिसर्चेस भी चलते रहते हैं। Which kind of collaboration? At the individual level, at the departmental level, institutional level? Institutional, ma'am. आप उस पर क्लिक कर दीजिए सर, आप कर सकते हो। गुड गुड गुड। ये मैंने अभी प्लान किया है तो इसके रिजल्ट मैं देखती हूँ। अच्छा, 3 आंसर्स मिले हैं मुझे। प्लीज आप लोग, 1-2 लोग थोड़े और अपने आंसर दे दीजिए। Ma'am, I'm unable to getting the link. So, okay, I'm resending it in the chat box. Now you get the link? I'm just searching it. In the chat box. It is there. You have to click on the one of the options. So I got 3 responses, right, and it right, is very ma'am, right. interesting. Okay, I got 3 responses and very interesting. Because 33%, 33%, 33% for the departmental, institutional, and national collaboration. You can respond later on also because a link will be there open. Link will be open there. Okay. So now only 3 responses. I'm coming to our. I have next. submitted. Thank you. I will see. Okay. Coming to the next part, that is the open learning, open pedagogy. Actually, here we are talking about highest level of openness in the process of learning. So it is actually a blend of strategies, technologies, and network communities that make the process and products of education very transparent, understandable, and available to all the people involved in that process. So available for the teachers also, for the co-teachers, for the learners, co-learners, all. So this open pedagogy, it is actually at the present scenario even also, we are in a very closed teacher-centered design where teacher is the role model, teacher has to do everything. So now in the open pedagogy, we move towards the open learning centered design where the learners
have all the responsibilities, they have control all over the process of learning. तो वो जहाँ ये open pedagogy की बात हम करते हैं, बहुत ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगी, but the knowledge is co-created in the team, facilitated through mutual interaction and reflection. What the learners do when there is some concept, learners have to respond on that concept. They have to put their ideas, add their values, add their knowledge, and then the learning is very open, very social in nature and experiential. As per the he said that learning is open, social and experiential and scaffolded by teachers who become facilitators of learning. तो अगर जो हम NEP की बात कर रहे हैं जिसमें मेन फोकस है टीचर एज ए फैसिलिटेटर, तो वो फैसिलिटेटर सारा ओपन पेडागोजी का जो प्रोसेस है वो ही सीन हमें प्रोवाइड करता है, जहाँ लर्निंग ओपन है, फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर और सोशल वैल्यूज डेवलप देयर इज हाई डिग्री ऑफ ओपननेस, वो वहां पे रहता है ओपन पेडागोजी में. एंड इट रिलाइज ऑन लर्नर ड्रिवन प्रैक्टिसेस. जो भी लर्नर ड्रिव कर रहा है, जो उसका कंट्रोल है, दैट इज लर्नर्स के पास में होता है एंड इट इज सेल्फ रेगुलेटेड इन नेचर. तो होता क्या है, व्हेन जो नेटवर्क टीचर जो भी एजुकेटर्स है वो नेटवर्क हमारे स्टूडेंट्स भी हैं. वहां पे फिजिकल स्पेसेस हैं, बाउंडेड ऑनलाइन स्पेसेस है एंड देयर इज ओपन ऑनलाइन स्पेसेस. दिस ओपन पेडागोजी इट talks about the open online spaces which can be used in the process of learning. तो इसमें डीप में मैं नहीं जा रही हूँ, बट इट इज बेस्ड अपॉन द कनेक्शन ऑफ आइडियाज. तो वो जो कनेक्शन ऑफ आइडियाज है वो बेस्ट आइडियाज निकालने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं. Hegarty he has given 8 attributes of open pedagogy and according to him it is participatory technology. जहाँ पार्टिसिपेशन है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रोल दे रहा उनका है और वही उस कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं. Openness and trust is the important characteristics of this open pedagogy. There is innovation and creativity. Why there is innovation? Because जब ideas मिलते हैं तो कुछ नयापन आएगा, नया आएगा तो innovation आएगा वहाँ पे. There is sharing of ideas and resources. Connected community is there and it is learner generated. वो जिधर से generate करता जिधर जाएगा उधर वो generate होता चला जाएगा. But वो टीचर वहां पे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को गाइड करता है, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करना. एंड इट इज रिफ्लेक्टिव इन नेचर. यहाँ जब रिफ्लेक्शन होगा तभी वो आगे जाएगा. तो रिफ्लेक्टिव जो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्टिव बनाओ, इवन हमारे टीचर्स रिफ्लेक्टिव नहीं, तो टीचर स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्टिव के लिए इट इज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड पीयर रिव्यू. जो हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो पीयर वहां पे साथ वाले लोग ही उसको देखते हैं, उसी में डिस्कशन भी होता है, कन्फ्लिक्ट भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है, एंड देन process of learning goes on. Now coming to the 21st century pedagogy की बात करें तो it encourages the collaboration, जो कि हमने पहले बात कर ली. वो collaboration हमारा interdisciplinary भी हो सकता है, technology based होना चाहिए, and जो हमारी assessment है वो 360 degree transparent और objective goal oriented, constructive transparent, self assessment, peer assessment और the stakeholders, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, या जो टीचिंग प्रोजेक्ट बेस्ड है, या हमारे जो फ्लुएंसी, जो तीनों हमने लिटरेसी, फ्लुएंसी, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी फ्लुएंसी की बात की, उनको करना है, या जो एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन है. तो ये सारी हमारी जो 21st सेंचुरी जो है वो टीचिंग लर्निंग का जो हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना है या कोलैबोरेशन की है, इसकी बात की जा रही है. और इन सब में हम देखें तो रिटेंशन रेट्स ऑफ वेरियस लर्निंग मेथड्स अगर हम देखें तो ये सारे सबसे ज्यादा जो हमारी रेट है वो है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में. जब हम दूसरों को टीच करते हैं तो 80% है प्रैक्टिस बाय डूइंग. तो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग में ये तीनों चीजें आ जाती हैं, डिस्कशन भी, प्रैक्टिस भी एंड देन टीच. तो वो क्या है, ये मैं थोड़ा सा डालना चाह रही थी. एक्सपेरिएंशियल लर्निंग क्या है, इसमें एक हमारे टीम एक्टिविटी थी, मैं इसको नहीं ले रही हूँ. एक्चुअली जो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस. और मैं कहती हूँ कि कोई भी एक्सपीरियंस गलत हो ही नहीं सकता. एवरी एक्सपीरियंस इज ट्रू. और जब वो ट्रुथ है इट मीन्स वहां पे नॉलेज जनरेशन है वहां पे, क्योंकि कोई भी नॉलेज जो है वो ट्रुथ ही होता है. तो एक्सपीरियंस को उससे लिंक करते हैं. सो व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस. तो जहां पे एक्सपीरियंस का एक्सचेंज हो रहा हो, एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ हो रहा हो, उसको हम एक्सपेरिएंशियल लर्निंग बोलते हैं. इट इज डिफाइंड एज लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन डूइंग. तो सम एक्टिविटी इज देयर. आपसे हमने पूछा था वहां पे कि क्या है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग का मेन कंपोनेंट, जो हमने वहां पे ली थी, और आपने कहा था एक्सपीरियंस और एक्टिविटी आई थी. Actually, the main part of experiential learning is reflection. How you reflect. वही सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिफ्लेक्शन है, और वही ब्लूम्स में क्रिएशन में आ रहा है, बट दैट इज द रिफ्लेक्शन. इट हैज बिल्ट फ्रॉम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. मतलब जहां पर पीयर है,
को क्रिएशन ऑफ नॉलेज है, जहां पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो है एक्सपीरियंस इज द कोर टू लर्निंग प्रोसेस। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है लर्निंग प्रोसेस में, बट रिफ्लेक्शन ऑफ लर्निंग इज द मेन पार्ट। तो वो लर्निंग कैन बी formed and reformed through experience and reflection. तो reflection उसका important. Why we are talking about experiential learning? पूरी NEP focus करी है because it solidifies the learning, it is easy implemented, required for millennial brain. तो उस मिलेनियल ब्रेन, जिस तरह की ब्रेन हम चाह रहे हैं सोसाइटी में हो, जो हमारा सस्टेनेबल सोसाइटी है, उस सब के लिए इट प्रोमोट्स कोलैबोरेटिव क्रिटिकल थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कोलैबोरेशन, क्रिएटिव, ऑल द थिंग्स which are described in our NEP 2020, जो थिंक एक होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, वो सारा ये प्रोवाइड करती है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। सो इट इंटीग्रेट cognitive perception, behavior, experience and this reflection. It is a holistic learning strategy. जो critical reflection होता है वो क्यों होता है, मैं इसमें डीप में नहीं जा रही हूँ बिकॉज टाइम भी है, नेक्स्ट आपका सेशन भी है। मैं एक सिर्फ डिस्कस करना चाह रही थी, जो क्रिटिकल मोड्स ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्रेजेंटेशन ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकती है, कोई मीडिया हो सकता है, ई पोर्टफोलियो हो सकता है। मैंने कहा टीचर का रोल है जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनको आप कैसे मैनेज करोगे, तो ई पोर्टफोलियो को भी मैनेज कर सकते हैं। दो इसके स्टेजेस होते हैं, एक होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस, दूसरा है कंटेम्पलेशन और तीसरा है एप्लीकेशन फेज, ये नॉलेज जनरेशन का। मैं इसमें नहीं जा रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल्स बताना चाह रही हूँ, दिखाना चाह रही हूँ एक्चुअली। और इसमें सर्टेन लेवल ऑफ एडवर्सिटी भी होना चाहिए टू पुश द कॉग्निटिव प्रोसेस। जो भी हो रहा है, जो लर्निंग हो रही है, उसके लिए कुछ एडवर्सिटी भी होना चाहिए। कैसे किया जाता है ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ। एंड इट इज these are the process where the learners are engaged intellectually, emotionally, socially and soulfully. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है। और लर्नर्स they take the initiative, they make the decision, they reflect and they are accountable for their own learning, for the results also. So it is 100% जो हमें चाहिए वही चीज को यहाँ पे है। मैंने ये एक्टिविटी मुझे दिखाना है एक्चुअली। ये मैंने एक ऐसे ही कराया था, जिसमें वर्कशॉप कराई थी, जिसमें मैंने कहा था कि एक पोटैटो को अगर हाई एल्टीट्यूड पे हम पतीले में बॉईल करेंगे तो क्या होगा। ये आप देख रहे हो, मेरा स्टूडेंट है, पीएचडी स्कॉलर, इसने इमीडिएटली ये दौड़ा पोटैटो लेकर के, क्योंकि एक्सपीरियंस करना था, एक्टिविटी करनी थी, और ये कंप्लीट एक्सपीरियंस फेज है। इसमें इसने किया। दूसरा हो रहा, उसमें नेट पे सर्च किया, सब कुछ किया, इसमें डिसाइड किया, ये कंटेम्पलेशन फेज है। एक्चुअल क्या होता कंटेम्पलेशन फेज में, इट इज द एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस। हम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करते हैं, हम कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया, उस पर डिस्कशन होता है, और काफी डिस्कशन होता है, कंफ्लिक्ट भी होता है। इसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं एंड देन रिफ्लेक्शन, वो ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है। देखिए रिफ्लेक्शन आया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा डिस्क्राइब किया कि पोटैटो हाई एल्टीट्यूड पे पतीले में बॉयल होने में टाइम क्यों लगेगा और वह यहाँ क्यों नहीं लगता। तो वो टेम्परेचर और प्रेशर की बात है जिसको इन्होंने यहाँ पे फिर डिफाइन किया। सिमिलर सेकंड एग्जांपल था जिसमें मैं भी थी, स्टोरी का था, ये पेपर राइटिंग का एक फेज था। यहाँ पेयर एंड शेयर भी होता है। तो कोऑपरेटिव जो हमारे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो भी वहां पे यूज होते हैं। दिस इज द कंटेम्पलेशन फेज, जहां डिस्कशन हो रहा है, कोलैबोरेशन, एंड देन द रिफ्लेक्शन फेज। और ये जो रिफ्लेक्शन है, यहाँ क्रिएटिविटी है, आइडिया है, समथिंग डिफरेंट। हमने एक स्माइल से पेपर प्रेजेंटेशन को लिंक किया है और यहाँ पे हम उसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। सो रिफ्लेक्शन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। रिफ्लेक्ट करना है। तो क्या होता क्या है, टॉपिक दे दिया, आपको एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोरेशन का आपकी फ्रीडम है पूरी टीम की, एक्सप्लोर करके आओ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करो, डिस्कशन करो, कंक्लूजन पे पहुंचो, कंफ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करो, कंक्लूजन पे पहुंचो एंड देन रिफ्लेक्ट अपॉन। तो ये इसका मेन है। ये तीसरी ग्रुप है जिसका कंटेम्पलेशन फेज है, पेयर एंड शेयरिंग यहाँ पे हो रहा है, ये भी एक एक्सपीरियंस का। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में इसको कहा गया था कि रेनबो कैसे फॉर्म करता है। इन्होंने एक्सपीरियंस करने के लिए छत पे भागे तुरंत, और उन्होंने जाके वहां पे ग्लास ऑफ वाटर लेकर के उन्होंने एक्सपीरियंस किया, किसी ने नेट पे सर्च किया। दिस इज द एक्सप्लोरेशन फेज और कंक्रीट एक्सपीरियंस फेज। यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। और रिफ्लेक्शन में आप देखो, ये जो लर्निंग है, जो फर्स्ट आप देख रहे होगे, उसमें अंधेरा किया हुआ क्लासरूम में, एंड उसका रिफ्लेक्शन है, तो कितना अच्छा रेनबो फॉर्म कर रहा है। सोर्स ऑफ लाइट मोबाइल को किया, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनसे कैसे उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है। नीचे की स्लाइड में वो लाइट दिख रहा था, थोड़ा सा कम दिख रहा था, तो उन्होंने अंधेरा किया क्लासरूम को, और देन वो उसको ज्यादा। ये जो एक्सपीरियंस है ये कोई नहीं बता सकता, ये जब एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता चलेगा। ये नेक्स्ट टॉपिक था एप्लीकेशन, ये प्रिपरेशन, एक्चुअलाइजेशन। किसी
सिटी को बताना हो, कहीं किसी भी जगह को करना है, हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में करना हो, एनवायरमेंट हो, जो भी हो, ये फिर रिफ्लेक्शन फेज है। आप देख रहे हो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शंस भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया भी है, ओरल भी है, प्रेजेंटेशन भी है, स्लाइड भी है, ऑडियो बना लीजिए, वीडियो बना। मैंने ऑनलाइन यहाँ पे लेक्चर देते हुए कराया है ये, और मैं बहुत, मुझे इतना अच्छा लगा जब पार्टिसिपेंट ने वहीं पे बैट बॉल लाके वो खेल करके मुझे वहीं पे वो कॉपी का उसने बनाया, बॉल छोटा सा लेके, और मुझे दिखला दिया उसको करके। साइंस के कुछ टॉपिक्स दिए थे मैंने। तो ये है रिफ्लेक्शन फेज। इट डिपेंड्स कि आप कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे वॉल्यूम और वेट को उन्होंने करके क्लासरूम में ही दिखाया कि रिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं। यूज प्रेशर कुकर एंड सेव एनर्जी, ये टॉपिक हमने क्लासरूम में छोड़ दिया। ये लिखा होता है, क्या होता है, बच्चों को छोड़ दिया, और उसको फिर बाद में कनेक्ट किया गेज सेक्स लॉ से, और वो हो गया। वो आके एक्सप्लोर करके बताएंगे कि ये होता है, ऐसे होता है, रिफ्लेक्ट करना है। जो हमारे हिली एरियाज में जहाँ पे टर्न होता है, तो एक कर्व होता है रोड में, वो पूछ ले बच्चों से कि क्या होना है। आप क्लासरूम में ये क्वेश्चंस को थ्रो कर दीजिए, एनी क्वेश्चन, और उसके बाद उनको छोड़ दीजिए। दे विल एक्सप्लोर एंड दे विल डिस्कस, दे विल रिफ्लेक्ट अपॉन, और फिर आके वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये एक एक्टिविटी थी, इसको भी मैं नहीं ले रही हूँ। तो ये लास्ट हमारा है, एक्टिविटी भी है। सो इट all about the changing role of the teachers, the learners and the learning environment. मैं एक एक्टिविटी अभी लास्ट में लेती हूँ, वो मैं एक्टिविटी लूंगी। इसमें आपको फीडबैक भी देना है और आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। So thanks to all of you. I am really grateful to Dr. Vatsala for giving me this opportunity to interact with you all. मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ लिंक। And I'm also grateful to Dr. Navneet for inviting me at this platform. And you must have got this link. This is my learning Padlet. जब भी मैं लेक्चर लेती हूँ इस लर्निंग पैडलेट में मैं फीडबैक लेती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन द प्लस साइन एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड एनीथिंग। you have to give your feedback. So अगर जितना आप क्रिएटिव हो गए, जितना इनोवेटिव हो गए, उतना अच्छा है। वो क्रिएटिविटी आप यहाँ शो कर सकते हो। आप ऑडियो, वीडियो, इमेज कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम वी कैन टेक द क्वेश्चंस। Meanwhile, we are in the course of submitting this feedback. The session is now open for your queries and questions. If anybody wishes to ask anything to Professor Madam, resource person of the day, please feel free to raise your questions and queries. Ma'am, your mic is mute. Sorry. No question means absence of dynamic learning environment. Am I right? Yes, I received your answer. Please write your name also. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम आपका लेक्चर सुना, बहुत ही आपने सरलता से बहुत ही अच्छा बताया है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। You can also give your feedback. आप दे सकते हैं अपने इस लर्निंग पैडलेट पे भी। हाँ, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। यस, ये ओपन रहेगा, आज के दिन के लिए ये ओपन रहेगा, तो आप कभी भी दे सकते हैं, बिकॉज आपका नेक्स्ट सेशन भी है शायद। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। लिंक हम आप इसको अगर अभी एक्टिव छोड़ें तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी अपने लेक्चर्स में व्यस्त हैं और फिलहाल इसको बाद में यूट्यूब से एक्सेस करेंगे, ये मैं उनके साथ भी शेयर कर दूंगी। हमने ग्रुप बनाया हुआ है सभी पार्टिसिपेंट्स का,
और ये रिक्वेस्ट है हमारा कि आप इसको शाम तक एक्टिव रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये रात तक खुला रहेगा, no problem. मैं डॉक्टर सुरभि से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज का सेशन क्लोज करने के लिए। Thank you, Dr. Vatsala, for giving us such a good and such a eminent speaker. Thank you, ma'am. The today's session was very wonderful. Wonderful in the sense that we had interaction also with you. The small activities which you conducted, that was the very best part of the session. And in future also, we would like to invite you for such a kind of activities. And it would be very helpful to our teachers, to our participants also. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you, madam. Thank you. And I also request Dean sir to share his closing remarks with us. Please, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you to all. Sir, I think your mic is, sir, your mic is muted. Yes. Summarize ma'am's talk, which was delivered in 1.5 hours, and continuously ma'am was speaking 90 minutes. So ma'am has covered, I think, every aspect of NEP 2020. Not even a single aspect is left. And the things were told in a very precise manner and very simplified manner. Because we have faculty members from schools also, we have faculty members of higher education also. So ma'am has given a broad idea of school education to higher education. It was really marvelous, ma'am, and we all enjoyed it. We enjoyed it really. Thank you. Thank you very much. Thank you, Thanks to all sir. of you. And I once again thank Professor Seema Dhawan, madam, that in spite of her ill health and when I called you right before this session, I was really feeling bad for putting you in this position, because I could hear your voice and it was really hoarse. But I think आज के पूरे session में किसी को ये realize भी नहीं हुआ होगा that you are not well. And that speaks volumes about the kind of person you are, madam. Thank you so much for being so wonderful throughout. Thank you. Thank you, everyone. And with this, we conclude the third session. We will take a break of only 5 minutes in between the two sessions, and then we'll begin with fourth session right away. The resource person for fourth session will be none other than Dr. Navneet Sharma. And sir is going to speak on the curriculum and curriculum framework. And I mean, he's one of the best persons to talk about this. So we'll take a very short break of 2-3 minutes only, and then we'll begin right away. Please stay tuned. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye.